Welcome back to learning sociolinguistics in one sitting. So, I have divided the lectures into different subtypes or sub video categories. The reason is that you can obviously choose from where you want to begin, and you can also take rest. So, continuing with face. So, it is our public self-image that we try both to protect and to promote positively. For example, people do not like to appear incompetent in front of their boss. That is, they try not to lose face. When a person has made an error, they often try to minimize it. They try to save face. So face is our public self image. ये हमारा public self image है जिसको हम प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं कि अगर हमें कोई काम नहीं आता तो हम उस काम को छुपाते हैं, हम अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाते हैं, उसे लोगों के सामने रिवील नहीं करते और अपनी गलती को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. तो ये हम फेस को सेव कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेस सेविंग एक्ट. तो हमारी जो पब्लिक सेल्फ इमेज है उसको हम जब सेव करते हैं सो दैट बिकम्स अ फेस सेविंग एक्ट. इसके साथ दो related terms हैं. So this is positive face and negative face. So positive face refers to one's self-esteem, while negative face refers to one's freedom to act. So these two aspects of face are the basic wants in any social interaction, and during any social interaction, cooperation is needed among the participants to maintain each other's face. So for example, if I want to order someone to bring me a glass of water, so I should add please. So in this way I am saving the next person's face, or I don't want his negative face, so I'll be adding please and this will save his negative face for him. तो उसका वो negative face save हो जाएगा क्योंकि हुक्म मानना किसी को पसंद नहीं होता. जब please लगता है तो अगला बंदा सोशली उस पोजीशन में आ जाता है कि वो आपकी बात को मानता है. तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इसमें रोल प्ले करता है. So next is gossip. So relaxed talk on familiar topics between friends in informal setting. And did you hear that Mary won a lotto last week? Really? Yeah, she's always so lucky. So this is an informal talk, and gossip also involves untrue opinions and untrue facts or untrue incidents. तो gossip आपकी वो रोज़मर्रा की गुफ्तगू है जिसमें आप एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, बातचीत को चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए दूसरे से बात करते हैं, किसी को कोट करते हैं, और हम नॉर्मली इसमें गीबत भी कर जाते हैं जो कि इंतहाई बुरी बात है और एक कबीरा गुनाह. सो इसमें हम लोग इस चीज़ का ख्याल हमें रखना पड़ेगा कि हम गॉसिप करते हुए रूमर्स को प्रमोट न करें, क्योंकि गॉसिप्स एंड रूमर्स दे आर क्लोजली कनेक्टेड. तो व्हेन गॉसिप्स आर देयर सो मच दे टर्न इनटू रूमर कि आपने गॉसिप की, वो गॉसिप अगले ने सुनी, उसने उसको कैसे सुना, हमारे लिसनिंग स्किल्स भी माशाल्लाह हैं, उसने उसको कैसे कन्वे किया, फिर अगले ने उसको कैसे सुना. तो दैट गॉसिप इवन दो इट मे बी ट्रू चेंजेस इनटू सम डिफरेंट काइंड ऑफ रूमर. सो एक चाइनीज़ विस्पर एक एक्टिविटी है, अगर आप उसको करेंगे विस्परिंग फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, सो यू विल सी कि हर बंदा उसको एक नए सिरे से एक डिफरेंट अंदाज में उसके मीनिंग्स निकाल रहा है. Hedge is a word or phrase used to weaken or soften the face of an utterance. For example, I suspect that he is a bit unreliable. So here the words I suspect that and bit, so they are weakening the sentence, like you're not directly like alleging someone to be unreliable, or you're not commenting directly, rather you're using weakening words like which are giving a softening effect, that you are suspecting, you're not sure, or he is not totally unreliable, he is a bit unreliable. The sense of the sentence is same, he is unreliable, whether to some extent or to a large extent. Unreliability is unreliability, but the word suspect and bit soften it. So this is called hedge. तो हम जब ऐसे words use करते हैं कि वो इंतहाई नालायक इंसान है, तो ये एक बड़ा यानी कोई माइंड करेगा इसको जो इस चीज़ को अपने बारे में रिमार्क सुनेगा. अगर हम इसको थोड़ा सा सॉफ्टन करके ये वीकन करके बोल देंगे ना कि उस अच्छा इंसान है लेकिन उसमें
थोड़ी सी मेहनत करे तो कर सकता है, अभी उसमें ये काबिलियत नहीं है। सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ सॉफ्टनिंग इफेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट सॉफ्टन हो गया, उसको हमने थोड़ा सा रूम दे दिया कि हाँ उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन अभी इस लेवल पे आने पे टाइम लगेगा। सो ये उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा। Honorifics. So honorifics are expressions which indicate the relative status of social roles the speaker and adversary, for example, higher status of adversary, army, private to corporal. Yes, sir. So this is the way when we are talking to people on higher level, higher grade. So we use the terms boss, yes, sir, right colonel. So these when we are sounding like these words, so these are honorifics which bring a distance, a social distance and the professional distance as well, कि वो बंदा हमसे रुतबे में या उस स्टेटस पे बड़ा है। तो ये यस सर कहने से लग रहा है कि ये जो प्राइवेट है ये एक छोटे लेवल पे है, और जो कॉर्पोरल इज़ अ बॉस, सो ही इज सेइंग हिम यस सर। जिस हम अपने सीनियर से बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर से बात करता है, सो वो honorifics यूज़ करते हैं। सो दीज आर honorifics. Next, isogloss. So this is a boundary which distinguishes an area on a map where a certain linguistic feature is found from areas in which it is absent. तो ये एक बाउंड्री है जो डिस्टिंग्विश करती है मैप पे, एरियाज़ को डिवाइड करती है डायलेक्ट के हिसाब से और लिंग्विस्टिक फीचर के हिसाब से, कि कई एरियाज़ में कुछ लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स हैं, कईयों में नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर पुराने लाहौर के ऊपर इसको डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे रे को रे बोलते हैं कि मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। तो ये रे को रे बोलना एक लिंग्विस्टिक फ़ीचर है जो कि लाहौर के बाकी एरियाज़ में शायद मिसिंग होगा। Jargon is a particular and often technical language, especially vocabulary, used by a group of specialists such as doctors and lawyers to talk about their specialty, a feature of occupational style. For example, अब जो वकील स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखते हैं, जो वकालत की ज़ुबान में लिखते हैं या केस लिखते हैं, तो वो एक टेक्निकल लैंग्वेज है। वो जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। डॉक्टर्स जो टेक्निकल लैंग्वेज में दिल को कार्डिक कहेंगे, अब हम कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, वो कहेंगे जी कार्डिक अरेस्ट था, तो हम दिल को हार्ट कहते हैं, वो उसे कार्डिक के लेवल पे या कार्डिक की टर्म यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ जार्गन, जो कि उनके ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल हवाले से एक डिफरेंट वोकेबलरी होती है हर चीज़ की। Language attitude. So how people feel about different languages and dialects, this generally reflects the views of the people who use them. तो जो लोग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, डायलेक्ट्स को यूज़ करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। आई स्पीक पंजाबी इज़ अनदर थिंग, बट वट आई फील अबाउट पंजाबी इज़ अनदर थिंग। आई स्पीक इंग्लिश, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं इंग्लिश के बारे में क्या सोचता हूँ, या मैं कोई ख़ास एक डायलेक्ट बोलता हूँ उसके बारे में मेरी क्या सोच है, और वो डायलेक्ट जो मैं बोलता हूँ वो क्या चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो हमारा एटीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल, प्रीडोमिनेंटली लैंग्वेज का जो एटीट्यूड है, कोई लैंग्वेज पेंडू नहीं होती, ये स्पीकर्स का एटीट्यूड होता है लैंग्वेज की तरफ, जो उसे पेंडू या उसे एक एलीट बनाता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर पंजाबी को यहाँ पे पेंडू लैंग्वेज कहते हैं, तो ये स्पीकर्स का एटीट्यूड है। लैंग्वेज इज़ परफेक्टली फाइन, लैंग्वेज इज़ आउट क्लास लैंग्वेज। इसके अंदर बाबे बुल्ले शाह ने लिखा, हीर वारिस शाह लिखी गई, सो इट इज़ क्वाइट रिच लैंग्वेज, बट स्पीकर्स का एटीट्यूड इसको एक पेंडू लैंग्वेज बनाता है। सो दिस इज़ द attitude of speaker, not the language itself. Language change. It is a change within a language over a period of time. कि लैंग्वेज के अंदर कुछ अरसे में चेंज आ जाती है। So if we talk about English language, so English language has suffered many changes in all the parameters, in morphology, in phonology, in phonetics, in syntax, semantics and orthography. सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शुरू से लेके अब तक बहुत चेंजेस आई हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हर लैंग्वेज जो है वो लिविंग लैंग्वेज है, और लिविंग थिंग जो होती है वो चेंज के प्रोसेस से गुजरती है। और लिविंग थिंग के लिए एक चीज़ जो चेंज नहीं होती वो लफ्ज़ चेंज खुद है, कि सिर्फ तब्दील नहीं होती, बाकी सब कुछ तब्दील होता है। सो लैंग्वेजेस चूँकि लिविंग लैंग्वेजेस होती हैं, चल रही हैं, इनके अंदर इजाफा हो रहा है, इनकी कटिंग हो रही है, वर्ड ऑब्सलीट हो रहे हैं, तो चेंज इज़ ऑलवेज देयर। सो चेंज जो है वो लैंग्वेज का एक खासा है।
सो इन इंग्लिश लैंग्वेज ने हर लेवल पे चेंज किया। आप फोस्टर्स के ज़माने चौसर के ज़माने की लैंग्वेज सुने, आपकी लैंग्वेज सुने, फ़र्क है। मेरी एक वीडियो जो कि 14th सेंचुरी के बैकग्राउंड पे है, उसके साथ ही उसमें मैंने एक चौसर की बिगनिंग 18 लाइंस को चौसर की इंग्लिश, उस ज़माने की इंग्लिश में बोला। तो उस ज़माने का एक्सेंट सुने और अब का एक्सेंट देखें इंग्लिश का, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि लाइक अब जो है हम सनड्रे कहते हैं, तब सनड्रारे था। सो निशे इज़ टू फॉर द नाइट। सो देयर सर्टेन वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन ऑल टुगेदर चेंज हुई है और इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा बदलती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये लैंग्वेज का एक बड़ा खूबसूरत एटीट्यूड है, लैंग्वेज की एक पॉजिटिविटी है कि लैंग्वेज टाइम के साथ साथ बदलती है। नाउ इफ़ आई speak those lines in front of you, so it may be like this, यानी in 14th century में मैं दोनों आपको पढ़ के सुनाता हूँ। So first is the English one, when that April with its shower sweet and the drought of March has pierced to the roots. So this is the English language, the accent in present times. So what was it then? On that April with its shower sota, the drought of March has pressed to the rota and breathed every vein in such locu, of which virtue engendered is the flu. So this is the language of that time. So we see that language suffers or goes through the process of change. Language death. It is a situation where all the speakers of language die, so that the language dies with them. For example, if there comes a tsunami or some such a state कि जिस तरह हम आज से पहले कौमों के बारे में पढ़ते हैं कि पूरी कौमें गर्क हो गई। सो व्हेन दे डाई, एब्सोल्युटली देयर लैंग्वेजेस डाई विद देम। व्हेन द होल नेशन डाइज, द लैंग्वेज डाइज एट वंस। So language planning is a deliberate, systematic attempt to address the communication issues of a society by studying the varieties and developing a policy concerning the form, selection and or use. So language planning होती है कि हम status किस language को दें, किसको official language रखें, उस language को कौन सी variety को follow करेंगे। अगर हम English को choose करें तो English में कौन सी variety हम follow करेंगे, या कोई और language है तो उसका कौन सा dialect होगा जो जिसको हम supreme dialect समझेंगे। तो ये language planning एक higher base पे होती है, government की base पे होती है। Language shift is when a community moves from using one language to using another for everyday communication. This can be a gradual process over several generations. So ये फ़ौरन नहीं होता, लेकिन एक लंबा अरसा इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह हमने शिफ्ट किया फ़ारसी से उर्दू में, और जिस तरह इंग्लिश पीपल ने लैटिन और फ्रेंच से शिफ्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी कम्युनिटी उस लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाती है। Lexical items. So lexical item is a unit in dictionary of a language. It may consist of more than one orthographic word. Orthographic means spelling. So ये एक यूनिट है डिक्शनरी का, एक लैंग्वेज का, जिसको हम अल्फाज कहते हैं जिनके मानी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेड अप इज़ वन लेक्सिकल आइटम इन शी मेड अप अ स्टोरी। सो उसमें एक स्टोरी एक अलग लेक्सिकल आइटम है, लेकिन मेड अप एक डिफरेंट आइटम है जो कि एक अलग सेंस दे रहा है। शी एक अलग लेक्सिकल आइटम है। सिमिलरली लेक्सिस क्या होता है? ये वोकैबुलरी है, द टोटल स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी अल्फाज हैं वो उसकी वोकैबुलरी कहलाएंगे, उस वोकैबुलरी को लेक्सिस भी कहा जाता है। लेक्सीम हमारी मेंटल डिक्शनरी है कि हमारे माइंड में हर लैंग्वेज के कुछ अल्फाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ लेक्सीम। Lingua franca is a language serving as a means of communication between speakers whose first languages differ. For example, English is a lingua franca. We use English if we are in Germany, we use English if we are in Dubai, we use English if we are in England. Because English is a common language and it is used all over the world. It is the language of internet. आप इंटरनेट पे हर जगह पे इंग्लिश देखते हैं। आप इवन जर्मनी या किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे उनकी टेलीफोन डिक्शनरीज, फ़ोन डायरेक्टरीज़, उनके जो मैप्स हैं,
और उनके जो साइन बोर्ड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इंग्लिश भी ऐड होती है। वो ऐड इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश को जानते हैं, तो जो फॉरेनर्स आते हैं, जो टूरिस्ट्स आते हैं, सो वो तमाम मुल्क जिनमें टूरिज़म ज़्यादा है वो इंग्लिश को वहाँ पे लिखना या अपने साइन बोर्ड्स पे कम से कम लिखना ज़रूरी समझते हैं ताकि लोग उसे समझ लें। सो लिंगुआ फ्रांका इज़ अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन टू पीपल whose first language is different. Linguistics insecurity is an anxiety or lack of confidence about correct or standard linguistic usage, especially in a formal situation. People sometimes hypercorrect or overextend a particular use when they are unsure of themselves. For example, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने में हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि हमारे टेंसेस की गलती ना हो, हम प्रॉपर जेंडर के साथ उसके रिलेटेड वर्ड्स को यूज़ करें, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ डज लगाएं, आई के साथ डू लगाएं, और आई के साथ शेल लगाएं, ही के साथ विल लगाएं। ये सारी की सारी हमारे हाइपर करेक्शंस हैं कि हम अब ओवर सेंसिटिव हुए होते हैं जब हम इंग्लिश को सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमें इसमें अपना पॉजिटिव फेस हमने सेव करना है कि हम इसमें इनकॉम्पिटेंट नहीं हैं। तो जब ये चीज़ हद से बढ़ जाती है, एंग्जाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है हमें, सो दिस इज़ आर लिंग्विस्टिक इनसिक्योरिटी, कि हमें डर होता है कि ये हमें कहीं ना कहीं इसकी वजह से किसी बुरे रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। A marker is a linguistic feature which indicates people's social class and style and identity. Like हम इसको यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि लोगों की सोशल क्लास क्या है, उनके बोलने का स्टाइल क्या है और उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस तबके से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। सो ये मार्कर्स हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मेक अ मार्कर कि पीपल हु स्पीक पिज़्ज़ा आर रॉन्ग, पीपल हु स्पीक पिज़्ज़ा आर राइट, सो दे आर स्पीकिंग गुड, उनको इस चीज़ के बारे में पता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। सो दिस मे बी अ मार्कर। सो हम वर्ड्स को या वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को या किसी रिलेटेड फिनोमिना को एज अ मार्कर रख सकते हैं लोगों को जज करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन दे आर हैविंग और व्हाट सोशल क्लास दे बिलोंग टू। Monolingualism is the knowledge of only one language. Like bilingualism was the knowledge of a person of having two languages. So यहाँ पे जो एक ज़ुबान बोलने का नॉलेज है उसे मोनोलिंग्वलिज्म कहते हैं। लिंग्वलिज्म मीन्स ज़ुबान एंड मोनो मीन्स वन। Multilingualism is a knowledge of more than one language. Like here, most of us can speak in Punjabi, most of us can speak in Urdu, most of us can speak in English. So we are multilingualist. So वो जहाँ पे ज़्यादा एक से ज़्यादा ज़ुबान यानी दो से ज़्यादा ज़ुबानें इंसान बोलता हो उसे मल्टीलिंग्वलिज्म कहा जाता है। Network, dense network and multiplex network. So these are related terms. Network is your social network of people. How many people are there? जिसको हम PR कहते हैं, personal relationing. How many people are there whom you know or whom you are in contact with? तो वो आपका एक network है। For example, if I go to my university, I have my colleagues there, I have students, I have the clerical staff there, and then I come back home, I have my family, and there are people who work at my home. So this is my network. So dense network क्या है कि if I am having more than one network, for example, if I'm having colleagues and they're also my friends, so मेरा ये network dense हो गया कि they're not only my colleagues, they're also my friends, my best friends. Multiplex network is a network in which people are involved with a range of different individuals in a variety of distinct spheres or activities. For example, Gavin plays basketball with Tom, works with Palm, and shares a flat with Sid. His social network is multiplex. That if you have more people in your understanding, in your daily interaction, daily communication, तो आपका इंटरेक्शन जितना बढ़ता है वो नेटवर्क से डेंस पे आता है, डेंस से वो मल्टीप्लेक्स पे आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोशल रिलेशनशिप कि वो जितना ज़्यादा एक्सटेंड होंगे उतना आपका नेटवर्क एक्सटेंड होता है। नेगेटिव फेस नीड्स, like we've already discussed, an individual's desire not to be imposed upon or impeded in action. For example, you need to not have others expect you to join in activities you don't like.
So I don't want to be joining those activities which I don't like, and I want people to know this thing. So if someone wants me to do some work which I am not interested in, so it is my negative phase, and if the person wants to save the negative phase, he should add the word please to it. तो वो जब ये ऐसे words use करेगा कि आप चलें हम ये खेलते हैं, मैं कहूँगा मुझे ये खेल नहीं पसंद, अच्छा प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ खेलें. सो इन दिस वे वो मेरा नेगेटिव फेज जो है उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं, वो नेगेटिव फेज हो रहा है. And negative politeness in the same way is the use of language which indicates awareness of an individual's negative face needs. ऐसी लैंग्वेज बोलना जो कि नेगेटिव फेस नीड्स के हवाले से है, कि अब वो जो लैंग्वेज बोली जाएगी कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ. इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कहा जाए कि उठो मैंने यहाँ पे बैठना, या आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ. सो दिस इज़ नेगेटिव पोलाइटनेस, कि आपने उसके नेगेटिव फेस को सेव किया ऐसी लैंग्वेज बोल के कि जिससे उसकी आज़ादी पे कोई फ़र्क नहीं आया. Non-standard. So linguistic forms of varieties that do not conform to the standard. So we may have different standards. For example, West Yorkshire English और African American Vernacular English, ये दोनों जो है नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के. सो स्टैंडर्ड डायलेक्ट में भी द रॉयल इंग्लिश, द क्वींस इंग्लिश और BBC इंग्लिश, अगर हम उसे स्टैंडर्ड समझते हैं, सो दैट मे बी द स्टैंडर्ड वैरायटी और कोड. तो बाकी जो उससे डेविएट करेंगे वो नॉन स्टैंडर्ड वैरायटीज़ होंगी, वो उसके लेवल पे कंफॉर्म नहीं करती. Norms are the accepted ways of doing something within a community. For example, way of opening an interaction, way of gaining the flow. So ये हमारे accepted रास्ते हैं कोई काम करने के एक सोसाइटी में या एक कम्युनिटी में, कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे एंटर हुए तो आप कैसे ग्रीट करेंगे, इंटरेक्शन स्टार्ट कैसे करेंगे. अब जिस तरह कोई भी फंक्शन हो तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं. सबसे पहले तिलावत होगी, उसके बाद नात होगी, तो ये उसके नॉर्म्स हैं. एक मीटिंग है, उसके नॉर्म्स हैं कि सबसे पहले उस पर तिलावत की जाए और सबको सलाम किया जाए. तो ये कुछ नॉर्म्स होते हैं. आप घर में एंटर होते हैं तो नॉर्म्स ये हैं कि आप सबको सलाम करो. आप महफिल में हैं तो आपको चाहिए कि आप सबको वर्बली सलाम कर दो, अगर आप सबसे अलग अलग सलाम नहीं कर सकते. सो दीज आर द लाइक कल्चरल थिंग्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. ये एक सोशल सेटिंग से रिलेटेड होते हैं. तो हम इनका यानी रिलीजियस वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ वो कुछ और चीज़ें. ये नॉर्म्स जो हैं दे आर हाईली रिलेटेड और लिंक्ड विद द सोसाइटी के. कहते हैं डू एट रोम एज रोमन्स डू. तो डू एट रोम एज रोमन्स डू मीन्स कि जो उनका नॉर्म है आप उनको फॉलो करो, क्योंकि अब आप उनकी सेटिंग में हो. तो उनकी सेटिंग में हम उनके वे ऑफ लिविंग को फॉलो करेंगे. Observer's paradox. So this is quite interesting. So the aim of linguistic research is to find out how people speak when they're not being systematically observed. The paradox is, however, that data is only available through systematic observation. For example, if I want to sit in a class and see whether the teacher and the students are talking to each other in English or not. So if I sit in a class and tell them that I am to monitor your spoken English, definitely there will be we have discussed in insecurity, so they will be quite aware of the fact and they may start speaking in English. So in this way my research can get bad results because they are not speaking the way they want to. And if I do not tell them that why I am sitting, so my being there doesn't make any excuse. Or for example, if I say them that I am here to monitor your teaching methodology, so this is being unjust to our research. We are not being ethical. So research की ethics क्या कहती हैं कि हम बताएं कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बताएं किसी को उनको कि हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट उस चीज़ पे अपना बिहेवियर चेंज कर ले, तो ये ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स है. Official language is a language used for government business with a primary utilitarian rather than symbolic function. यानी जिसको हम business purposes के लिए यूज़ करते हैं, जिसको official documentation के लिए यूज़ करते हैं, वो official language होती है. Overt prestige is the opposite of covert prestige, कि वो language की varieties जिनको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिनकी तरफ ज़्यादा behave करते हैं.
पिजन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. पिजन इज़ द फर्स्ट स्टेज. ये एक लिंगुआ फ्रांका होती है नॉन नेटिव स्पीकर्स के दरमियान. तो जब ये पिजन ट्रांसफ़र होती है फर्स्ट जनरेशन को तो ये क्रियोल बन जाती है और कुछ जनरेशन्स में वो एक कंप्लीट लैंग्वेज बन जाती है. Positive face need is an individual's need to maintain a positive self-image and sense of belonging and of being appreciated by others. So, when we want to be appreciated by people by some work, so this is our positive face needs. For example, if I do some work, I need to be acknowledged. If it is my birthday, I need to be wished. So, this is my positive face need. अगर कोई इसको मुझे विश करेगा तो उसने मेरे पॉजिटिव फेस को सेव किया. Positive politeness is the use of language to reinforce the hearer's positive face and emphasize solidarity. For example, hey Paul, gonna give me a ride? A positively polite way of asking for a lift. So, this is a positive way जिसमें आप अपने फेस को सेव कर रहे हो कि आप ये नहीं कह रहे कि यार रिक्वेस्ट मुझे छोड़ दोगे, अगला इनकार कर दे. आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कहा कि फिर मेरे साथ चलने में ऑनर फील करोगे. सो दिस मीन्स कि आपने अपने पॉजिटिव पोलाइटनेस को यूज़ किया अपने आप को सेव करने के लिए. सो रियल टाइम स्टडीज इज लिंक्ड विद एपरेंट टाइम स्टडीज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज टू टर्म्स. सो इन एपरेंट टाइम स्टडीज वी डिस्कस्ड two groups of the same society, two age groups of the same society and their language behaviors. In real time studies we monitor the same group over some period again. So, for example, if I have investigated a child when he was 5 years old, so I will be investigating the same child when he is 10. So, this is real time studies. इसमें काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ता है क्योंकि आप उसी एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को जिसको आप पहले रिसर्च जिस पे कर चुके हो आप उस पे ही दोबारा काम कर रहे हो. Received pronunciation, it is originally a neutral accent in the UK associated with the most highly educated section of British society, sometimes called BBC English since it is used by some BBC News readers. So, this is received pronunciation which is originally neutral accent. So, which is considered this is the top accent and this should be followed. Register may refer to types of language used in different situations, including differences in lexical choices, more often used in a narrower sense to refer to specialist jargon associated with certain activities and group of people. For example, cricket terms such as silly mid off, legal language. So, legal language and silly mid off, then when we are attributing to them, we are using them as register. So, silly mid off is a register of cricket. Legal language is a register of law. Sapir Whorf hypothesis. So, the hypothesis of linguistics relativity, a part of relativism also known as Sapir-Whorf hypothesis or Whorfianism, is a principle claiming that the structure of language affects its speaker's word, view or cognition, and thus people's perceptions are relative to the spoken language. So, language is determined by thoughts. So, this is the strong form of it. The strong version of this hypothesis says that a language determines thought and linguistic categories limit and determine cognitive categories, and weak version says that linguistic categories and usage only influence thought and decision. So, there are two versions of it, one is strong version, one is weak version. So, primarily it is about this thing कि language जो है वो thought से determine होती है कि हमारी जो thought है basically वो determine करती है हमारी language को. अगर हमारी thought aggressive है हमारी language aggressive होगी, अगर हमारी thought polite है in a way कि हमारी language भी polite होगी. So, thought जो है उसका effect होता है language पे. हम political parties को देखते हैं, उनके speakers आपस में लड़ाई करते हैं. जब उनकी लड़ाई उनके बयानात को हम सुनते हैं तो जब हम आपस में डिस्कस करते हैं तो हम भी उसी एग्रेशन को उसी थॉट को लेके आते हैं. उस थॉट के रिजल्ट में हम अपनी लैंग्वेज को डिटरमिन करते हैं कि हमने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं. जिस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी वो बड़ी एग्रेसिव बात करती है तो उसके सपोर्टर भी एग्रेसिव बात करते हैं क्योंकि वो थॉट्स ने उनकी लैंग्वेज को डिटरमिन किया. स्लैंग इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल वर्नैकुलर वोकैबुलरी and it is subject to rapid change. तो स्लैंग होती है एक इनफॉर्मल वोकैबुलरी
हर लैंग्वेज के अंदर एक स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो कि फॉर्मल नहीं होते और उनको हम फॉर्मल बोल भी नहीं सकते, तो हम उन स्लैंग वर्ड्स को बड़ा खामोशी से यूज़ करते हैं। हम उन्हें एक इनफॉर्मल सेटिंग में यूज़ करते हैं, तो एक अच्छी सेटिंग में हम स्लैंग वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो डॉग है, अब डॉग को हम अगर ओपनली कुत्ता कहेंगे तो दिस में बी यूज्ड एज अ स्लैंग वर्ड, तो हम उसको डॉग नहीं, हम उसको डॉग के तौर पे ही एट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सेइंग द वर्ड कुत्ता इज़ समथिंग नेफेरियस, इसे हम ज़रा कोई अच्छी सेंस में नहीं लेते, सो दैट इज़ अ स्लैंग वर्ड। So social accents, or known as sociolects, so these are variations in pronunciation related to the social background, कि social background भी हमारा वेरी करता है हमारी pronunciation में, हमारी language में। For example, एक इलाके में रहने वाले लोग जो कि पंजाबी भी बोलते हैं और महाजरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस जो हैं, वो जो महाजरी लैंग्वेज उनकी सोसाइटी की बेस पे वो उस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि एक सोशल बैकग्राउंड है उनका उस चीज़ से। सो दैट इज़ रिलेटेड टू your society, community in which you are living, so that is your sociolect. Social distancing or social distance, which is very famous nowadays. So this is a degree of closeness of relationship between participant in an interaction, how well they know each other. So the social distance between two brothers is minimal, but it is greater between a client and the lawyer or a doctor, because वो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन एक फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपस में वो एक दूसरे को जानते हैं, तो उनका सोशल डिस्टेंस कम होगा और अननोन लोगों से हमारा सोशल डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सोशल डिस्टेंस जितना कम होता है उतनी इनफॉर्मेलिटी इंक्रीज़ करती है, उतनी आपस में प्यार मोहब्बत या एक इंटीमेसी डेवलप होती है। टैग क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल यूजिंग सच फॉर्म्स एट इजंट इट, डोंट दे, ये टैग क्वेश्चंस होते हैं जब हम बात करते करते अपनी बात की असबात चाहते हैं या उसको सेकंड कराना चाहते हैं ओपिनियन को, कि मैंने उस चीज़ को बताया था, तुम बताओ भाई बताया कि नहीं बताया, इन दिस वे, कहा था ना। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ टैग क्वेश्चन, कि जिसमें हम टैग करते हैं अगले किसी और बंदे को कि भाई तुम बताओ, तुम इस चीज़ को सेकंड करो, मेरे ओपिनियन पे अपनी ओपिनियन दो। Variety or code, again this is an overlapping concept which is used for language. So any set of linguistic forms which platform according to social factors used under specific social circumstances. The term includes different accents, different linguistic styles, different dialects, and even different languages which contrast with each other or for the social reasons. So जो एक थोड़ा बहुत जो डिफरेंस हो उस लेके बड़े डिफरेंस तक जहाँ पे एक लैंग्वेज का दर्जा आ जाता है, इन तमाम जो वेरिएशंस हैं उन्हें हम कोड्स या वैराइटीज़ कहते हैं। Vernacular, there are at least three components of this term. Number one is uncodified or unstandardized variety. Number two, acquired in the home. And number three, typically used for informal colloquial interaction with family and friends. So ये तीन forms हैं जो vernacular के लिए use होती हैं. Like first of all is एक unstandardized form जिसको हम use करते हैं. फिर secondly एक ऐसी वो ज़ुबान जो कि हमने घर में सुनी और हमने उसको सीखा, वो भी वर्नैकुलर है। और वो लैंग्वेज जो कि हम कलोकियल एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उस लैंग्वेज की फॉर्म्स को वर्नैकुलर कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिटिंग। आई होप दिस सिटिंग वाज नॉट क्वाइट लॉन्ग इनफ बिकॉज इट वाज पेइंग समथिंग टू यू and it is a good compilation for your examination. So these are the references which I used. So this is rotulectbook.com. They had very good catalog of all these terms. So some mostly terms was taken from there. And then Peter Trudgill's Introduction to Language and Society. So I'm thankful to both of them for their unique kind of approaches and knowledge. So you must go through these things as well. Thank you very much.